गुड इवनिंग अरुणप्रीत। ओके अरुण, फर्स्ट चैप्टर हो गया, करे क्वेश्चंस? नहीं, ट्राई ट्रू है तो बहुत दिन हो गए हैं। अब कितने हुए? असाइनमेंट आई नहीं है या करी है सबमिट तुमने? नहीं ना? नहीं सर, वो नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, फिर अपलोड नहीं हो रही थी। आज शाम में दोबारा कर दूंगी। गुड इवनिंग हरनूर। हरनूर बच्चे, तेरा हो गया फर्स्ट चैप्टर? ओके चलो, दिस इज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है आज। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। Okay, what are alcohols? General formula of alcohol is ROH, where R is alkyl group. Phenol is AROH. AR means aryl group, like benzene. Okay, and ethers. Ethers are ROR dash, means there is one oxygen, and on either side of oxygen there may be two alkyl groups, like in first case one aryl or one alkyl group, like in second case, or both the aryl groups, like in third case. ठीक है? First is alcohols. First alcohol is CH3OH. Here R group is the CH3 alkyl. ठीक है? In phenols, AR group like benzene, phenyl ring, C6H5. ओके, कैटेगरीज हो जाएगी। आर, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सो ऑन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन ही है दिस, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। कैन यू, हाँ जी, कैन यू एबल टू क्लासिफाई दीज the following as primary alcohols, secondary alcohols? Primary means 1 degree, secondary 2 degree, tertiary is 3 degree. Can you classify the following compounds as primary, secondary and tertiary alcohols? बोल दे जाओ अनन्या। फर्स्ट वन, प्राइमरी। इट इज प्राइमरी। इनको क्लियर है, बेस्ट है, अदरवाइज देखो, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड in the carbon which is bonded to the functional group, this carbon. Okay, now check whether this carbon is bonded to one carbon, two carbon or three carbons directly. Check karo, this carbon atom is bonded to only one carbon, एक carbon ना bonded है। ठीक है, therefore this alcohol is a primary alcohol। ठीक है, if the carbon of interest, which carbon is carbon of interest? This carbon to which functional group is attached is further bonded with only one carbon atom, then that alcohol is known as primary alcohol. Okay,
This one is primary alcohol. Okay. Second one, Primary. Primary. this one is again primary. This is our carbon of interest. It is 1 degree because this carbon is bonded with only one carbon directly. Okay. One degree. Okay. Third one, Primary. Primary. again, this is our carbon of interest and it is a primary alcohol. Good. Next one. Secondary. Secondary. Now concentrate on this carbon. Okay. The carbon to which functional group is bonded. Now this carbon is bonded with one carbon on this side and second carbon on right hand side. So this alcohol is a secondary alcohol. Okay. This alcohol is a secondary alcohol. Next one, Secondary. again, concentrate on this carbon. Okay. This is bonded with one carbon on left hand side, second carbon on right hand side. This alcohol is a secondary alcohol, 2 degree alcohol. Okay. Last one, Tertiary. carbon of interest is this. Okay. It is bonded with one, two, three carbons. Okay. It is a tertiary alcohol. Okay. 3 degree alcohol. Now in same question, 11.1, try to attempt the second question. Identify the allylic alcohols in the above examples. Remember the allylic? So को याद है ठीक है, otherwise देखो allylic, there is a double bond, carbon carbon double bond, ठीक है, and after double bond there is carbon carbon single bond. If this structure is present, this one a double bond followed by a single bond, this type of alcohol is known as allylic alcohol. Can you identify such system? There's This is second and sixth. this one is known as allylic group. CH2 double bond CHOH means a double bond followed by a single bond. हाँ जी अनन्या दोबारा बोल. There's Which one? second or sixth. ठीक है. Second one is allylic. This alcohol is allylic alcohol. Another one, There's sixth. double bond followed by a single bond. Yes, this one. Double bond and then there is a single bond. This one. It is allylic. Alcohol. Okay. And there is double bond followed by a single bond. Then it is allylic alcohol. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Then you have to memorize some names. For example, this. It is known as phenol, benzene ring, and OH group. This compound is known as
phenol. Okay, and if there are two OH groups on ortho position, neighboring position 1 and 2, that compound commonly known as catechol. Okay, catechol. And IUPAC name of catechol is, it is benzene 1 comma 2 diol. Okay, it is benzene 1 2 diol. Third one, can you name its IUPAC name? रिसोर्सिनोल तो है, चलो 1 3 पोजीशन पे है. अदर देन रिसोर्सिनोल क्या नाम होगा? Benzene 1,3 diol. इट इज बेंजीन 1,3 diol. Okay, benzene 1,3 diol. Okay, if the two hydroxy groups are present on 1 4 positions, then the compound is known as quinol or hydroquinone. Okay, commonly known as benzene 1,4 diol. Benzene 1,4 diol. Okay, next is cresol, orthocresol, metacresol, paracresol. These are the common name, but IUPAC name. IUPAC name, functional group is OH, substituent is CH3. This is functional group, so it has to be given number 1 position. Functional group. Methyl group is substituent. Numbering करो 1 2 3. क्या नेम हो जाएगा इसका? 3 methyl 1 benzene. No. 3 methyl. Other than methyl, structure क्या है? That compound is benzene 1 O. phenol. Okay, 3 methyl phenol. Similarly, this compound 1 2 3 4, this compound is known as 4 methyl 4 methyl phenol. 4 methyl phenol. Okay, this compound is 4 मिनट ऊपर करना. yes. Okay, next देखो
It's a table in NCERT book. Name read करके देखो. Are these names are okay? First, IUPAC name. Try करो. Name of first compound. This one is first is there is only one carbon atom. So for one it is meth, single bond है, methanol. Okay. Second one, longest carbon chain has 3 carbons. This compound is propane ol or propane 1-ol, propanol. Okay. Next is this compound 1, 2, 3. Name this compound. This compound is Propane 2 ol. propane 2-ol. Okay. Next one, Butanol. this one is 1, 2, 3, 4. This compound is butanol. Butanol. Okay. Next compound 1, 2, 3, 4. This compound is Butan 2. butane 2-ol. Butane 2-ol. Next one 1, 2, 3. 2-methyl 2-methyl propane 1-ol or simply propanol. Next one, Karman, can you name this compound? IUPAC name of this compound is no. फिर मैं बताऊं हाँ जी बोलो. सर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2-methyl propanol. 2 प्रोपेनॉल हाँ 2 2 मिथाइल 2 good. प्रोपेनॉल ठीक है आ रहा. 1, 2, 3. It is 2-methyl propane 2-ol. 2-methyl propane 2-ol. And next compound is 1, 2, 3 प्रोपन ट्रायोल propane. Okay, 1, 2, 3 triol. Okay, it is propane 1, 2, 3 triol. Okay, now look at the names, common names. Table draw कर लो. Okay, and focus on common names. क्या हो जाएंगे? If anyone has any problem in common name, let me know. I think methyl alcohol okay है. N-propyl okay होएगा. Isopropyl CH3 2 times CH isopropyl.
N-butyl, sec, isobutyl, tert butyl. If any of these names, if you have any difficulty, कोई भी problem है, please let me know. किसी को भी. ये सेक और टर्ट सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के लिए है ना? Sec for secondary, tert for tertiary. ठीक है, sec stands for secondary. Okay, for secondary means our carbon of interest is this carbon. Okay, look at its degrees. To how many carbons it is directly bonded? It is bonded with one on left hand side and another on right hand side. 2 carbons. So its degree क्या होगी? It is secondary butyl, because there are total 4 carbons. Secondary butyl alcohol. Okay. Similarly, isobutyl alcohol. Okay. Names लिख लो. हो गए, then let me know. हरनूर वो कितने हैं, समृति वगैरह? पता नहीं सर, उन्हें फिजिक्स की क्लास में नहीं लाई आज। ओके ओके. नमिशा, तेरी फिजिक्स की क्लास है ऐसी, और बाकी गुरर्श वगैरह सारे? यस सर, गुरश तो थी बाकी और गुरलीन? दर्शनूर और गुरलीन नहीं थे. कौन कौन? दर्शनूर और गुरलीन. ओके. आई थिंक हो गया होगा. Names of ethers we will will do later. Try to write the IUPAC names of these compounds. Ignore the ether. Second और fourth ignore करो. First, एकम, any of the एकम, दोनों में से कोई भी एकम बोल दो. Name of first compound. एकम हुआ नहीं माइक अभी भी? ठीक है. Sir, 4-chloro 2,3-dimethyl pentanol. Okay, you are naming कहाँ से start करी है? From right hand side. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5. हाँ जी. क्या बना नेम? Uh, 4-chloro 2,3-dimethyl pentanol. पेंटेनॉल. गुड. ठीक है, अग्री.
बाकी देख लो। नमीशा ठीक बोल रहा है? यही है नाम या कुछ डिफरेंट है? यही है सर। फोर क्लोरो नहीं, कुछ अगर कुछ डिफरेंट है तो देख लो। डाइमिथाइल पेंटेनोल। नेक्स्ट वन. Okay, I'll make this compound name simple. Start with this because functional group is this. What is the name of this compound? फिनोल। It is phenol. Okay, so word root is phenol. You'll write phenol. Okay. Now start with other. I think now you can name it easily. सर 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it's a 2,6 di CH3 is a methyl group, dimethyl phenol. Okay, 2,6 dimethyl phenol. Uh, next कॉम्प्लेक्स वाला चलो बाद में ट्राई करते, पहले थोड़ा सिंपल वन. दिस वन सेकंड. अरुण प्रीत, दिस वन इज फॉर यू. सेकंड वन. करमन आवाज आ नहीं रही तेरी. हाँ जी सर। बोलो. ठीक है. दिस वन थर्ड वन. जी सर, एक मिनट सर। आई थिंक हफ्ते बाद मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम मेरा, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ठाक ही लग रही होनी आवाज. आप पहुंच भी रही होनी, थोड़ी हजे भी नॉर्मल भी नहीं आ रही. सर 3 ब्रोमोफिनॉल। विच वन, सेकंड और थर्ड? थर्ड सर। थर्ड. ओके. 1 2 3. यस. 3 ब्रोमोफिनॉल। 3 ब्रोमो. क्या फिनोल नहीं है? सर साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। साइक्लोहेक्सेनोल है. ठीक है. अगर फिनोल होता बच्चे, देयर हैज टू बी अ रिंग इनसाइड. ओके सर। ओके. इट्स नॉट यस सर। फिनोल. इट इज 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल. 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल. एनीवन? कोई बचा? एकम गिल फोर्थ वन. दोनों में से कोई भी दे दो, इधर एकम गिल और बिस्मन. ट्राई कर. फोर्थ वन. अरुणप्रीत वेट कर रहा हूं मैं. सेकंड वन. फिफ्थ वन कोई भी बोल दो, फर्स्ट का जिसने भी पहले बोलना है. सेकंड का बोलना. हाँ जी, हाँ जी, बोलो. 2,5 डाइमिथाइल 2 5 5 डाइमिथाइल. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रही है अरुणप्रीत? विच चेन? सर फिफ्थ हो गया। फिफ्थ हो गया. बोलो फिफ्थ. पहले चेन बता देना. सर राइट से। Okay, this is the chain. This. यस सर। Okay. सर ये है 2 ब्रोमो। 1 second. One. हाँ जी. अनन्या नंबरिंग बोल दो.
This one. Sir, right, sir. 1 2 3 4. Yes, bolo name. Sir, 2 bromo, 3 methyl, 2 bromo, 3 methyl, but, 2 ene, 1 ol. but, 2 in ol. 1 ol you may ignore. ठीक है, 2 in ol. Okay, sir. Okay. हाँ जी अरुणप्रीत, second one halfway रह गया. Left को From this or from top? इधर ही लेफ्ट को ही This one means ठीक करिए circle. Is this the chain? हाँ जी Numbering. सर इसका 2,5 मिथाइल हेक्सन 1,3 ओल. Arunpreet, numbering wrong बोल रहे थे बच्चे. Numbering is not from left. Numbering is done in this fashion. 1 2 3 4 5 6, so that the functional group gets minimum possible number. Functional group को कौन सा नंबर मिला है यहाँ पे? 1 and 3. Visible? If you number this chain from left to right, then functional group will get any number but not 1 and 3. कुछ बड़ा नंबर हो जाता. Okay, but in organic nomenclature we prefer the least sum. Okay, so okay, and name of this compound? 2,5 dimethyl 1 2 chicken 2 comma 5 dimethyl hexane hexane 1,3 diol hexane 1 comma 3 diol. ठीक है. Okay, fourth one, Bisman. Bisman, हूं मैं audible? वो कुछ भी बोल दे, सिंपल ही है ये तो. नो, चलो मैं खुरा नाम देखो. नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Functional group. Carbon bearing the functional group must be given priority. That is number 3. If we start from right hand side, 1 2 3, ठीक है, fourth आता, that will be wrong. So it is 1 2 3 4 5 6 from left to right. Now you can easily name this compound. It is hex 1 in 3 ol. Hexene 3 ol. Okay. Next is students, जहाँ से चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट होएगा. नॉमनक्लेचर तो चलो जो है वो है. थोड़ा बहुत preparation of alcohols. First preparation is from alkenes. We will do 2 methods for the preparation of alcohols from alkenes. First one is by acid catalyzed hydration. Okay, hydration means addition of water in presence of trace amount of acid. Okay, example देखो, consider propene CH3
CH double bond CH2. It is propene plus water HOH. Delta positive, delta negative in presence of sulfuric acid, right? Concentrated sulfuric acid. Temperature is about 443, okay, 443 Kelvin. Okay, the addition of water across this double bond takes place following Markovnikov rule. This rule, remember this rule? It states that hydrogen attaches with the carbon atom of the double bond. दो carbon atom है ना? One is this, another one is this. Carbon atom of the double bond which already contains more hydrogen. So hydrogen किसके साथ लग जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? CH3CH single bond CH3. Hydrogen attaches with this carbon. Agree? दिस इज मार्कोवनिकोव, जिसके पास पहले ही ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास भी, उसी के पास एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. एंड द OH goes to the carbon atom having lesser number of hydrogens. Okay, this is acid catalyzed hydration of alkene. बन गया ना? propane 2 starting from alkene, it is propane 2-ol, propanol. Now this is first mechanism. इसका mechanism करना है, means ये reaction हुई कैसे. First mechanism of your syllabus SN1 SN2 करे हैं, but steps involved नहीं करे थे, इसमें proper steps करेंगे. Okay, mechanism of this reaction by taking the example of hydration of propene ही समझाऊंगा मैं. First step is protonation. Okay, first step is protonation. H positive add होना. Okay, water है, H positive है. H positive कहाँ से आया? H positive is students from H2SO4, because we are using H2SO4 in this. Okay, we get protonated water, protein H3O positive, hydronium ion. Okay, in step 1 alkene ले लो, CH3CH double bond CH2 plus H3O positive. Okay, H3O positive. This alkene extract one of the proton, one of the H positive from the hydronium ion. Possibilities देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा. Possibility is that CH3 hydrogen attaches with the first carbon, highlight कर रहा हूँ, with this carbon. This is first possibility. Okay, or the hydrogen goes with second carbon. I'm writing that possibility too. CH3 CH2 CH2 positive, this one.
Okay, now categorize it. It is 2-degree carbocation because the carbon of our interest, which is the central carbon, is bonded with 2 more carbons directly. So this carbocation is 2-degree carbocation. This one is 1-degree carbocation. Anybody remember which carbocation is more stable? The 2 2-degree. 2-degree carbocation is more stable. ठीक है, so जिन्हें याद नहीं है, do write down that secondary carbocation is more stable than primary carbocation. ठीक है, जो secondary carbocation है that is more stable than primary carbocation. Okay, then attack of in first step carbocation generate हो गया, जो ज़्यादा stable है will take that, दूसरे को ignore कर देंगे. Attack of nucleophile takes place on the carbocation this nucleophile क्या है? Nucleophile we have water, HOH. Water has 2 lone pair. One of the lone pair attacks the positively charged carbon atom. Join करके लिख दो CH3 CH CH3 O. Yes. Positive charge. Almost done. Product बनने वाला है. Last step, deprotonation. CH3 CH. Just look at the first step, उसके opposite करना है. O H H positive plus H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है. फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करा था, सेकंड में वही प्रोटॉन वापस चला जाएगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट CH3 CH OH CH3. Okay, this is your product plus hydronium ion. So ये mechanism है बच्चे. डायरेक्ट क्वेश्चन जो 2 to 3 मार्क्स आना चाहिए एग्जाम में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट डाउन द स्टेप्स. कुछ भी पूछना है तो पूछ लो. अदर देन दैट जब प्रैक्टिस करोगे इसे बार बार लिख के देखना. ठीक है, ज़्यादा तो जितने भी मैकेनिज्म करोगे आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं. फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन हो जाएगा. बट अगर समझ भी आ गया तब भी बार लिख कर देखना. प्रॉब्लम यहाँ पे लिखने वाले क्वेश्चंस में ही आएगी ऑर्गेनिक में. लिख लिया.
डन। नमिशा नोट कर लिया? हाँ जी सर।